Good morning, everybody. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So, children, in the last class, we have discussed about Mowgli and about the Jungle Book. Yes, children. So, class 3, subject English, lesson number 4. Mowgli joins the wolf pack. So, children, Mowgli joins the wolf pack. So, children, open your English textbook, page number 37. Yes, children, this story is taken from Rudyard Kipling's The Jungle Book, yes, which is collection of stories about wild animals and their interaction with human beings. Among them, few of the stories are about Mowgli, a little boy who was brought up by a family of wolves. Okay, children. So, we have 8 characters. Yes, children, in this story, Mowgli joins the wolf pack. There are 8 characters. Okay, in Jungle Book there are so many characters, but we have 8 characters in this story. Mowgli joins the wolf pack. So, what are they? So, children, let's discuss the characters. Okay, so here we have 8 characters, 8 main characters: Mother Wolf, Father Wolf, and then Sher Khan, Mother Wolf, Father Wolf, Sher Khan, Man's Cub, Mowgli, Tabaki the Jackal, Akela, leader of the wolves, Baloo the brown bear, and Bagheera the black panther. So, children, Mother Wolf and Father Wolf are parents. So, children, as we have discussed, Mother Wolf and Father Wolf are parents. Okay, then who is Sher Khan? Sher Khan is the enemy of Mother Wolf and Father Wolf. Okay, so he used to eat human cubs and animals, and there is a law of the jungle. So, the law of jungle is most important in this story. Okay, and Sher Khan is the enemy because he does not follow some rules of jungle. Okay, children. So remember one thing, that the law of jungle has said that Sher Khan can't enter Seeonee Hill without the permission of the wolves. Yes, children, and he can't hunt. But he did not follow the rules, so he came here for hunting. So, children, so here see, Mother Wolf and Father Wolf are parents. Sher Khan is the enemy of Mother Wolf and Father Wolf. So, man's cub. So, children, as we have discussed the meaning of cub in our last class. So, children, what is meant by cub? Cub means like a baby, a child. Means a child of a man, and like that wolf's child, like baby wolf, they are called cubs. Cubs means क्या बच्चों? जो वॉल्फ के बच्चों को क्या बोलते हैं? कब्स बोलते हैं. जय वैसे ही इंसान के बच्चों को भी वो क्या बोलते थे? ये एनिमल्स कब्स बुलाते थे. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? कब्स मीन्स एनिमल्स के बच्चे या फिर इंसान के बच्चों को भी वो क्या बोलते थे? कब्स बोलते थे. ओके, सो मैंस कब यानी इंसानी बच्चा. जैसे आपने सुना होगा, शेर खान बोलता है इंसानी बच्चे. यस, मोगली को क्या बोलता है? वो मोगली कह के बुलाता है? नहीं, वो क्या बुलाता है उसको? इंसानी बच्चे. यस, सो मैंस कब मीन्स इंसानी बच्चा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? मैंस कब मीन्स इंसानी बच्चा. हु इज दैट? मोगली. सो देन तबाकी द जैकल and Akela. Akela is the leader of the wolves. So, children, who is Akela? Akela is the leader of the wolf. Then Baloo, the brown bear, and Bagheera, the black panther. So, children, there are totally 8 main characters. Okay, in this story, the Mowgli joins the wolf pack. So, children, इस स्टोरी में 8 मेन कैरेक्टर्स हैं. ओके, जो फर्स्ट कैरेक्टर है बच्चों, मदर वॉल्फ, फादर वॉल्फ. ये क्या है? ये पेरेंट्स हैं. ओके, तो शेर खान, जैसे हमने जंगल बुक में देखा है बच्चों, आपने भी देखा होगा. यस, शेर खान क्या है? एनिमी है. एनिमी यानी दुश्मन है. किसका? मदर वॉल्फ का और फादर वॉल्फ का. सो मैंस कब, मोगली यानी इंसानी बच्चा. तबाकी, तबाकी यस, आपने देखा होगा, जो शेर खान के साथ ही रहता है और सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है? जाके शेर खान को देता है. यस, देन अकेला द लीडर ऑफ द वॉल्व्स. वो जो लीडर ऑफ द वॉल्व्स का जो लीडर है वो कौन है? अकेला है. देन बलू, जो मोगली का बेस्ट फ्रेंड है. यस, द ब्राउन बियर, एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर. तो बच्चों
ये क्या है, 8 कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में. ओके, नाउ locations. So children, locations are very important. Okay, so remember one thing, that the law of the jungle has said that Sher Khan can't enter the Seeonee Hill. So children, see here, father wolf and mother wolf lives in Seeonee Hills. So children, in this story the locations are very very important. Okay, so father wolf and mother wolf lives in Seeonee Hill. Where they live? In the last class we have discussed, children, that they lives in Seeonee Hill. Yes. So Sher Khan lives near the Wengunga river. So here there are 3 main locations: Seeonee Hill, Wengunga river and Council Rock. So first we will discuss Seeonee Hill. Okay, Seeonee Hill, where the father wolf and mother wolf lives. So children, remember one thing, that the law of the jungle has said that Sher Khan can't enter Seeonee Hill without the permission of the wolves. So the wolves live in Seeonee Hill. Yes, so the Sher Khan can't enter Seeonee Hill without permission, but he did not follow the rules. Yes, so he came here for hunting. तो बच्चों, Seeonee Hill, जो फादर वॉल्फ जो मदर वॉल्फ है वो कहाँ पे रहते हैं? Seeonee Hill पे रहते हैं. और जंगल का एक क्या है, एक रूल है कि Seeonee Hill में कोई दूसरा जानवर, दूसरे लोकेशन का जानवर वहाँ पे नहीं आ सकता और वहाँ पे हंट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन. तो शेर खान क्या करता है, वहाँ पे आता है विदाउट परमिशन शिकार करने के लिए. ओके बच्चों, तो इस तरह से यस वो क्या बन जाता है, एनिमी बन जाता है वॉल्फ, मदर वॉल्फ और फादर वॉल्फ का. ओके, सो शेर खान पहले कहाँ पे रहता है? शेर खान लिव्स नियर द वेंगुगा रिवर. वो वेंगुगा रिवर के करीब रहता है, लेकिन वो हंट करने के लिए कहाँ पे आता है? Seeonee Hill में आता है, जो एक जंगल रूल के खिलाफ है. ओके, so then Council Rock. So what is mean by Council Rock, children? Yes, so Council Rock means, children, there are some important points from this lesson, like Seeonee Hill, Wenguga river, like Council Rock. So children, similarly the animals in Jungle Book have particular place where they have took major decisions. Especially they introduce their baby by putting their baby on कॉन्सिल रॉक. तो बच्चों, यस, कॉन्सिल रॉक जैसे आपने जंगल बुक में देखा होगा, यस एक मूवी आई है जंगल बुक, जहाँ पे आपने देखा होगा वो जो वॉल्फ होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन कहाँ पे लेते हैं? कॉन्सिल रॉक में. जैसे हम अब अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं, हम कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं. यस, उसी तरह से अगर वो कोई इम्पोर्टेंट अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? कॉन्सिल रॉक में जाते हैं. वो वहाँ पे क्या करते हैं? स्पेशली जो अपने न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, जैसे आपने देखा होगा बच्चों जंगल बुक में भी, यस मोगली में भी आपने देखा होगा कि वो जैसे जो वॉल्फ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे जैसे ही न्यू बेबी बॉर्न्स को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं. यस चिल्ड्रन, सो okay, so these are some important locations. So children, we can see, yes, Bagheera, then Baloo, then Sher Khan. Look at this picture, children. Here we can see Sher Khan, the Black Panther, Bagheera, the Baloo, and here you can see Mowgli. Yes children, so this story has taken from Rudyard Kipling's The Jungle Book, yes, which is collection of stories about wild animals. Yes children, so here you can see how Mowgli brought up with, yes, the wolves. So children, look at this, how आप बच्चों देख सकते हो एक मोगली जो एक इंसानी बच्चा है. yes children, आप जाके रहोगे जंगल में? no, we can't survive in forest, in jungle, because we are human beings, and in jungle there are animals are there. yes, so देखो, लेकिन जो इंसानी बच्चा है मीन्स मोगली, वो वहाँ पे सरवाइव करता है, वो वहाँ पे रहता है, यस वॉल्फ के साथ. तो बच्चों आप देख सकते हो जो मदर वॉल्फ और जो फादर वॉल्फ हैं वो मोगली से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं. यस, तो बच्चों आप देख सकते हो, ये देखो, यस वो क्या करता है, जब वो छोटा बेबी होता है मोगली, तब क्या करते हैं, वो जंगल में आता है और फिर तभी से वो वॉल्फ के साथ रहना शुरू करता है. यस चिल्ड्रन, जैसे आप देख सकते हो. यस चिल्ड्रन,
So children, this is जैकल. ओके, जो जैकल क्या करता है, सभी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शेर खान को जाके देता है. यस चिल्ड्रन. So children, so what we have learned today, we have learned about the main story behind this Mowgli, okay, behind this Jungle Book. Yes children, so the Jungle Book is very interesting story. तो बच्चों आपने भी देखा ही होगा. yes. So it was a very warm evening in the Seeonee Hill, and Father Wolf woke up from his day's rest, and Mother Wolf lay with her cubs. Yes, it is time to hunt again, said the father wolf, and he was going to spring downhill when Tabaki the jackal came and said that Sher Khan has shifted his hunting grounds and he has told me that he will hunt among these hills for the next month. So children, we have learned this in the last class. Yes, as we all know that the jungle rule is that the Sher Khan can't enter Seeonee Hill without the permission of the wolves, and he can't hunt there. But he did not follow some rules of the jungle, so he became enemy. Yes children, so we have learned this. So children, the next part of this story we will continue in our next class. Till then children, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.